yet again how the RTI Act is fulfilling its mandate as the people's tool in fighting the rank corruption that undermines the state's development initiatives. However, even with the support of the powerful new Act, not all battles are as easily won. To ensure that the information received under the Act is transformed into effective actions that bring about a positive change, the individual as well as the community needs to be prepared for a sustained struggle. One such wonderful example where the people took up this challenge comes from the village of Chaitudi Tetulia in the Dhanbad district of Jharkhand. The functioning of the village Anganwadi, which was responsible for the distribution of food rations, medical supplies, and financial help to adolescent girls and pregnant and lactating mothers, was characterized by gross irregularities. The disinterested and inefficient performance of duties by the Anganwadi worker, the Anganwadi Sevika, lay at the heart of the problem. It was then that Nagendra Yadav, a resident of the village, filed an RTI application seeking information about the appointment of the Sevika as well as the details of the schemes being run through the Anganwadi. आंगनबाड़ी को उसका जो मूल सिद्धांत है उसके ठीक विपरीत चल रहा था केंद्रीय, जस्ट उल्टा। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाया, बदले में आवेदन सूचना अधिकार के तहत आवेदन दिए हम लोग। क्या जानकारी मिला? सूचना अधिकार सब लिखित है हमारे पास। तो उसमें जानकारी मिला तो उसको पढ़कर एहसास हुआ कि केंद्र उस अनुरूप चल नहीं रहा। उसके बाद हम लोग यहाँ के ग्रामीणों को एकत्रित किए, बोले ऐसा ऐसा बात है, बोले ठीक है हम लोग आपके साथ हैं। और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी हुआ, उसके लिए जेल घेरा घेरी थाना घेरने का नौबत आ गया, पेपर में भी छपा वो चीज़। उसके बाद मैडम से यहीं का लोकल हस्तक्षेप हुआ। उसके बाद बोले नहीं अब ठीक से चलाएंगे ये। सीओ साहब से भी वार्ता हुई, सीओ साहब बोले नहीं ऐसा बात है तो हम ठीक से चलाएंगे, और अभी ठीक से मैडम चला रहे हैं। The information they had received using the RTI empowered the community to become the agents of change. लड़ाई कौन की है? आप लोग? सब को कहलखिन आगे वो रहलखिन पाछे हमरा के रहलिए। अच्छा तो क्या लड़ाई क्यों? हम लोग रहे तो पाछे वो रहे का हम लोग के नहीं मिले तो हम लोग बोले कि नहीं मिल रहा है, तब न तैयार हुआ बेचारा। हाँ, तो आप लोग आगे रहे, पीछे नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? तो लड़ाई करने से मिला तो जैसे बच्चे चलते, मतलब आपको आगे आना पड़ा ना, अपना अधिकार था उसको लेने के लिए। पेट भूखा है तो हम ही बोलेंगे। बिल्कुल। आप लोग को आंगनबाड़ी से अभी चावल बढ़िया से मिल रहा है कि ना? अभी ठीक मिल रहा है। अभी ठीक मिल रहा है? कब से ठीक से मिल रहा है? जब से मंगादर जब से विजिट किया है ना, हाँ, तो हुआ। बुला के लाते हैं हाँ। कि भाई आके चावल ले जाओ। अब ठीक मिल रहा है। हाँ। इस चीज़ मतलब सूचना अधिकार से ये हुआ कि बदलाव तो देखे ही देखें, लेकिन नौकरशाह और अफसरशाह जिसको कहते हैं, कर्मचारी ऊपर के विभाग के कर्मचारी अफसर जिसको कहते हैं, वो मतलब जो आवेदक रहेगा ना उसको दबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सूचना अधिकार में वही डट कर टिक सकता है जिसका मनोबल ऊंचा। While the success of Yadav and his fellow villagers is a heartening affirmation of the RTI's relevance, the difficulties they encountered also hints at the immense challenges in the effective implementation of the Act. Securing the information alone, however, is not sufficient to bring about the desired change. Quite often, the people come against an unresponsive bureaucracy and officialdom that refuses to act upon the corruption and malpractices revealed through the RTI. इसमें कौन कौन है? देबू महतो, अशोक रविदास, अनिल कुमार महतो, दिलीप कुमार महतो, शंकर भारती, शंभू राय। देखिए ये रहा, देखिए देबू महतो, दिनांक 11/2/7 से 16/2/7 तक। ये दूसरा योजना है और ये दूसरा योजना है। उन्हें सूचना मिल गई, कार्रवाई नहीं कर रहा है। बीडीओ साहब बोलते हैं कार्रवाई करने का मैंने हमारे पास। फिर उसके बाद देखिए हमने कंप्लेन करने के बाद भी सूचना अपने कंप्लेन पे मांगा कि उस पे क्या कार्रवाई? उस पे भी एक लेटर मिली हम लोग को, वो अभी अधूरा है। For the Act to assume its complete relevance, the people need to be empowered with the know-how to deploy the information they have secured in the most effective manner. Capacity building initiatives and institutional support addressing this need are an urgent requirement. Another critical issue that needs to be addressed is whether the traditionally dispossessed sections of a society, like the scheduled castes and tribes, are able to make effective use of the RTI Act. Is the Act designed to help them overcome the societal discrimination and disadvantages? In search of an answer, we return to the Mahendragarh district of Haryana to examine a story that illustrates the complex issues involved.
Roshni Devi, a resident of the Jharli village, belongs to the scheduled caste community. She is also a Panch of the village. When she sought information from the upper caste Sarpanch about the status of the village's job cards under the Narega scheme, he flatly refused to tell her anything. It was then that her friend Sunita Devi suggested filing an RTI application. Getting the information, however, was not going to be that simple, and their problems were just beginning. गरीब लोगों की सहायता के लिए मैं महिला पंच बनाई गई थी। लोगों ने बहुत खुश हुए थे, तब ये पद मिला था। तब तो मैंने भी अच्छे अच्छे काम जो है करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे। फिर उसके बाद मैंने सरपंच से जॉब कार्ड जैसे लोगों के बनाए गए थे, तो उसके बारे में कुछ सरपंच से जानकारी मांगी और कितने भी लोगों को काम दिलवाने के लिए उनसे पूछा। तो सरपंच ने ये कहा कि भी जॉब कार्ड मैंने आपको दूंगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा। ये सुनीता जी से मैंने फिर पूछा गया मैंने, तो इन्होंने मुझे बताया कि भी आप आरटीआई के तहत तो कुछ जानकारी ले। और फिर इन्होंने एप्लीकेशन लिख के मेरे को दी और मैं वीडियो ब्लॉक में पहुंची वहाँ, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया पत्र मेरा। फिर मैं सुनीता जी को साथ लेकर वहाँ गई वीडियो ब्लॉक में, उन्होंने मेरा पत्र ले लिया और रख लिया। उसके बाद 1.5 महीना के बाद में कोई सूचना नहीं मिली मेरे को। सूचना नहीं मिलने के बाद में मैंने प्रथम अपील की। प्रथम अपील के बाद में भी मेरे को कोई सूचना नहीं मिली। Roshni Devi's story highlights the deficiencies in the supply mechanism of the RTI, especially when being used by the marginalized sections of our society. अब ये सरकार ने कानून तो लगा दिया, लेकिन कानून सुनने के बाद में हम ही बाहर निकलते हैं और करते कुछ कहते भी हैं, लेकिन कोई सुनाई तो करता नहीं। दबा गरीब होना करके हरिजनों को दबाया जाता है, न कोई उनकी सुनाई करता, न कोई काम देता उनको। Meanwhile, the Sarpanch has continued his persecution by filing a false police charge against a family. पुलिस में सरपंच ने हमारा केस डाला है, वो भी हमारे पर दबाव डलाते हैं। सरपंच के कहने से वो पैसे दिया था, वहाँ हमारे पास तो पैसे है नहीं। हमने तो उनसे भी ये बोल दिया कि भाई हम तो जो सच्चाई है, सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं और यही करेंगे। Despite all of these difficulties, Roshni Devi and her friend Sunita Devi have not lost their faith in the RTI. They're determined to continue their struggle and are confident that they will win the battle. मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि तुम किसी से घबराना मत, डरना मत। जैसे मैं लड़ाई लड़ रही हूँ वैसे हिम्मत ना हारना, और आप कदम उठाओगी तो आपका काम, आप सफल जरूर होगी, काम जरूर बनेगा आपका। मैंने जैसे ये केस डाला है तो मैं इसको पूरा ही करके रहूँगी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं आगे कदम बढ़ाती ही रहूँगी। यहाँ से काम मेरा नहीं बनेगा तो मैं चंडीगढ़ भी अपील करूँगी। The stories we've examined leave us with a measured sense of hope and possibility. The RTI Act is only in its 4th year of implementation and is still being discovered by the citizens of India. They're discovering its relevance to their lives, discovering its power, the power to reclaim the governance of their own lives. These victories may seem small, and there are challenges ahead, but the beginning has been made, and the smell of a silent revolution is in the air.